So today I'm going to start with structural organization in animals, lecture 1. Okay, so today is the lecture 1 of this chapter. I will give you the notes plus explanation, NCERT line by line. I will explain you NCERT line by line. Explanation, NCERT line by line. Okay, so basically this chapter we will study about. I will give you the outline of this chapter, what we are going to study in this chapter. What is the outline of the chapter? Outline of the chapter is, we are going to study about tissues here. We are going to study about tissues. The outline of the chapter is, we are going to study about tissues and the types of tissues. Okay, like epithelial tissue is one type, epithelial tissue. Then we are going to study about connective tissue, connective tissue. Then we are going to study about muscular tissue, and then we are going to study about neural tissue. Okay, so these 4 tissues we are going to study about. Number 1 epithelial, number 2 connective, number 3 muscular tissue, number 4 neural tissue. Okay, so also we are going to study about frog and cockroach. Okay, about frog and cockroach in detail. Okay, about frog and cockroach. So this is the outline of the chapter. Okay, so in this chapter we will study about these things only. Okay, so let's start now. First of all, I will start from the basic. So cell. Now living things can be made of one cell or many cells, right? Living things can be made of one cell also, many cells also, right? So organisms are classified. Living organisms are basically classified into 2 types. One is unicellular and number 2 is multicellular. So living organisms are classified into unicellular and multicellular. Now unicellular is what? In unicellular we call unicellular as single celled organisms. Okay, and multicellular is many cells. Okay, multicellular is many cells. Okay, so in multicellular like humans are multicellular, animals are multicellular, right? In multicellular like humans, animals, there are many cells that work together. Okay, so basically यूनिसेल्यूलर में क्या होता है ना, एक सेल होता है. यूनिसेल्यूलर में एक सेल होता है जो सब काम करता है. ओके, सो यूनिसेल्यूलर में सिंगल सेल होता है ना, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. जो सिंगल सेल होता है वो सब परफॉर्म करता है, सब फंक्शन, सब काम. जैसे कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सिंगल सेल सब काम करते हैं, सब फंक्शन सिंगल सेल का होता है, सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिंगल सेल. ओके, यूनिसेल्यूलर में. पर मल्टीसेल्यूलर में मैनी सेल्स होता है. ठीक है, इधर पे सिंगल सेल नहीं होता है, मैनी सेल्स होता है. तो इधर पे
different functions are performed by different cells or tissues, you can say. Different functions, इधर पे different functions are performed by different cells, tissues, organs and organ system are performed by different cells. सब different cells different function perform करते हैं. many cells है, इधर पे एक cell नहीं है, बहुत सारा cell है, तो different cell perform different functions, different tissues perform different functions, different organs perform different functions in our body, organ system performs different functions. Are you getting me? Okay, is this clear now? So unicellular, single celled organism, multicellular, many cells. In unicellular, single cell perform all the functions, respiration, digestion, reproduction. Multicellular में, in multicellular animals there are many cells that work together. Okay, and different functions are performed by different cells, tissues, organ and organ system. I hope this is clear to you all. So basically this is a chain. Let me tell you the chain. Cell से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी. दिस इज द चेन, राइट. सेल से बनता है टिश्यू, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन एंड ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है बॉडी. ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, so in this chapter we are basically going to study about these tissues. We are going to study about these tissues in this chapter. Okay, so in this chapter we are basically going to study about tissues. So tissue is what? It is the group of similar cells along with the intercellular matrix or substances. इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स का और एक नाम होता है substances और substance performing the specific functions. So टिश्यू कैसे बनते हैं? बहुत सारा सेल बन स्पेसिफिक परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शंस. सो बहुत सारा सेल मिलकर बनता है टिश्यू. ठीक है, बहुत सारा सेल मिलकर बनता है टिश्यू. तो ये जो टिश्यूज है, ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है ना, तो ये सब सेम होता है. ओके, दिस ऑल द सेल्स आर सिमिलर एंड अलॉन्ग विद द ये सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स होता है और इसको हम लोग सब्सटेंस भी कहते हैं. इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स और सब्सटेंस जो परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ओके, लेट मी ड्रॉ एंड शो यू. ओके, वेट. सो लेट मी ड्रॉ. दिस इज अ सेल. सब सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स मिलकर बनता है एक टिश्यू. सो और एक सेल 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 और एक सेल. सो ये सेल मिलकर बनता है ये सेल के बीच में ये सब सेल्स है और इस सेल्स के बीच में ये सब क्या है? मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स और सब्सटेंस. इस सेल्स के बीच में
होता है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स और सब्सटेंस। ये है सेल, दिस इज अ सेल and these are the intercellular matrix or substance. Intercellular matrix or substance. This is a diagram of a tissue. Okay, तो सब this is a diagram of a tissue. तो what I told you, सिमिलर सेल्स बनकर, सिमिलर सेल्स मिलकर क्या बनता है, टिश्यू फॉर्म होता है, और वो टिश्यू के बीच में क्या होता है, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होते हैं और सब्सटेंस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, don't forget to like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for more updates, and thanks for watching. Bye bye.